Hello students, welcome back to TMI's home-based education. As we are in the last exercise of the chapter decimal, in which the last topic, that is subtraction of decimal, is being remaining, that is in exercise 8.6. Now if you see in your textbook on page number 181, it is being given that subtract rupees 18.25 from rupees 20.75. now this from word aata है, in that many of you are getting confused. ये फ्रॉम जब आता है तब खास याद रखना है कि 18.25 को 20.75 में से सब्ट्रैक्ट करना है. मेनी ऑफ देम क्या सोच लेते थे इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन देखो तो सही यहाँ पे 18 है, हियर इट इज 20, और मतलब भी क्या होता है सब्ट्रैक्ट रुपीज 18.25 फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, रुपीज 20.75 फ्रॉम मीन्स जो सेकेंड नंबर है उसमें से फर्स्ट को माइनस करना है. सो rupees will mention as it is being given, we are doing subtraction. So 18 point, sorry, now see I had only made a mistake. So rupees 20.75 minus rupees 18.25. So here now we can subtract 5 minus 5 is 0, 7 minus 2 is 5, 0 minus 8 is not possible, so we'll cancel, we'll borrow from here, so it will become 10, 10 minus 8 it will come as 2. So our final answer is rupees 2.50. Same way in second one, it is given in meter, 202.54 meter from 250 meter. So what we'll do, 250 meter, we'll write it over here, here it will be 202.54 meter. So here nothing is there, so we have to put 0 because we have to subtract. So from here we will borrow, it will become 4, 9, 9, and here it will become as 10. 10 minus 4 is 6, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7, 4 minus 0 is 4, 2 minus 2 is 0. So our final answer is 47.46 meter. ध्यान रखना है, just like addition while placing the numbers, rupees 5.36 from rupees 8.40. So we'll write rupees 8.40. From that we have to subtract 5.36. So we cannot subtract, so borrowing 10 minus 6 is 4, 3 minus 3 is 0, 8 minus 5 is 3, so it comes to rupees 3.04. Rupees 3.04. Now fourth one also I am doing, so last one you have to do it by yourself. 051 kilometer from 5.206 kilometer. So what we'll do, 5.206 kilometer and 2.051 kilometer. Now we'll subtract, 6 minus 1 is 5, 1, it will become 10, 10 minus 5 is 5, 1 minus 1 is 0, 5 minus 2 is 3, so it comes to 3.155 kilometer. Done, simple. Now in question number 2 it is being given that find the value of, वहाँ पे directly question में दिया है, in that way only you have to subtract 9.756 minus 6.28. इट इज़ गिवन डायरेक्टली ओनली, तो यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने नहीं जाना. जब फ्रॉम वर्ड यूज़ किया होता है एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो सेकंड नंबर दिया उसमें से जो फर्स्ट है उसको माइनस करना है. हियर इट इज़ डायरेक्टली गिवन दैट 9.756 माइनस 6.28. सो विल राइट इट इन द सेम मैनर, 9.756 and 6.28, nothing, so we can put over there 0. 6 minus 0 is 6,
15 minus 8 is not 5 minus 8 is not possible, so it will become 15. Now 15 minus 8 is 7, 6 minus 2 is 4, and 9 minus 6 is 3. So our answer comes 3.476. B, it's 21.05 minus 15.27. We'll subtract 21.05 and 15.27. 5 minus 7 is not possible. Here it is 0, so we have to borrow it from here. So it will become 0, it will become 9, and here it will be 15. So 15 minus 7 is 8, 9 minus 2 is 7, 0 minus 5 is not possible, so we'll borrow from here, it will become 1, and here it will be 10. Now 10 minus 5, it will be 5, so our answer comes, that is 5.78. So this was your question number 2. Now remaining 2 you have to do it by yourself. Now we'll move to the word problem which is given on the next page, that is 182. Now question number 3 on page 182, if you can see, it is being given that Raju bought books for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? राजू ने क्या किया, एक बुक खरीदा, उसकी प्राइस कितनी थी, रुपीज़ 35.65. उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ की नोट दी, तो उसमें से उसको कितना रिटर्न मिलेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो क्या करना पड़ेगा, 50 में से 35.65 को वी हैव टू सबट्रैक्ट, देन ओनली वी विल गेट कि शॉपकीपर ने उसको कितना वापस किया. सो व्हाट वी कैन राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल मनी with Raju is equal to rupees 50. Now cost of the book is equal to rupees 35.65, and therefore money he will get back from shopkeeper is equal to 50 minus 35.65. Again, if you want, you can do the rough work at the last, or if you want, you can do it here. 50.00 from that 35.65. If we will subtract, so we have to borrow, so 4, 9, 9, and it will become 10. Now 10 minus 5 is 5, 9 minus 6 is 3, 9 minus 5 is 4, and 4 minus 3 is 1. So total how much money he will get back? It will be rupees 14.35 rupees he will get back from the shopkeeper after giving 50 rupees note. The cost of the book was 35.65, so the shopkeeper will give him 14.35 rupees back. Now question number 4. Now Rani had rupees 18.50. She bought one ice cream for 11.75 rupees. How much money does she have now? उसके पास पहले कितना था, रुपीज़ 18.50 रुपीज़ उसके पास था. From that she had bought one ice cream, और आइसक्रीम की प्राइस कितनी थी, it was rupees 11.75. तो अब आइसक्रीम खरीदने के बाद उसके पास अब कितना अमाउंट बाकी रह गया, जो उसके पास टोटल था उसमें से उसने आइसक्रीम खरीदी, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो अगेन वी कैन राइट द सेम, टोटल मनी विथ रानी इज इक्वल टू रुपीज़ 18.50. cost of ice cream is equal to rupees 11.75. Therefore money left with her is equal to 18.50 minus 11.75. So again
the same 18.50 and 11.75. This subtraction, if you want, you can do it in the rough work also. Okay, no need to do it compulsory over here, and if you want you can do it, it's not a problem. So we'll borrow. So now it will become 10. 10 minus 5 is 5. 4 minus 7 is not possible, so we'll borrow from here. It will become 14. 14 minus 7 is 7. 7 minus 1 is 6, and 1 minus 1 is 0, means she is having now 6.75 rupees with her. टोटल 18.50 था, उसमें से इतने का आइसक्रीम ले लिया, तो अभी उसके पास कितना बचा, तो उसमें से माइनस करो, मीन्स टोटल 6.75 रुपीज इज लेफ्ट विथ हर. नाउ फिफ्थ one it is given that Tina had 20.5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. Now I think so you will understand. Curtain means पर्दे होते हैं ना जो, that is called curtain. How much cloth is left with her? तो टोटल उसके पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ था, उसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर उसने कर्टन बनाने के लिए कट कर दिया. कर्टन मीन्स पर्दे. तो अभी उसके पास कितना क्लॉथ बचा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इट मीन्स अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. So again, total cloth with Tina is equal to 20 meter 5 centimeter, then cloth used for making a curtain is equal to 4 meter and 50 centimeter. Therefore cloth left with her is equal to, क्या करेंगे, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर we will subtract. So now if we will write it in the decimal form, so 20 meter point 5 सेंटीमीटर मीन्स इट इज 0.5. ओके, जैसे हमने आगे भी किया था. देन 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, सो 5 minus 0 is 5. नाउ here we cannot subtract, so we'll borrow from here. It will become 9. Here it is 10. 10 minus 5 is 5. 9 minus 4 is 5. So total 5 meter and 55 centimeter, sorry 15. Okay, 1 minus 1 is here. So 15 meter and 55 centimeter cloth is left with her. That was your question number 5. Now question number 6, it is given that Namita travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this she travels 10 kilometer 20 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? So that you have to do it by yourself कि total वो 20 किलोमीटर 50 मीटर डेली ट्रैवल करती है वो नमिता. उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है, और बाकी का जो डिस्टेंस बचता है वो ऑटो से ट्रैवल करती है. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 किलोमीटर 50 मीटर, वहाँ पे ध्यान रखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. यहाँ पे सिर्फ 50 मीटर दिया है, सो इट विल बिकम 050. के उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर को माइनस करो एंड यू विल गेट द आंसर कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. That was question number 6. Now question number 7, it is given that Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this 3 kg 500 gram is onion, 2.75 gram is tomatoes, and rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? That we have to find out.
तो टोटल कितना केजी वेजिटेबल्स आकाश ने लिया है, दैट इज बीइंग गिवन, दैट इज 10 केजी। अब उसमें से 3 केजी एंड 500 ग्राम इज ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज, 2 केजी 75 ग्राम इज टोमेटोज, और बाकी जो भी बचा है वो क्या है, पोटैटोज। सो पोटैटोज का कितना वेट था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो टोटल इज बीइंग गिवन, ऑनियन और टोमेटोज का भी वेट दिया है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। ओके, वेट ऑफ ऑनियन, weight of potatoes, therefore total weight of onion and tomatoes is equal to करके दोनों को ऐड करो। लेकिन यहाँ पे खास ध्यान रखना है, it is 75 ग्राम, so it will become 075 ग्राम। ओके, 75 means 075 ग्राम्स, और फिर जो दोनों को टोटल करके आंसर आएगा उसको 10 kg में से माइनस करोगे, देन यू विल गेट द आंसर दैट हाउ मच what was the weight of the potatoes। ओके, पहले क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, उसमें से फिर उसको जो आंसर आएगा उसको फिर 10 में से माइनस करना है। सो व्हेन यू विल माइनस, इट विल बी 10.000, 3 zeros will be there, and then you will subtract, you will get the answers for the weight of potatoes। So this was the last part of the exercise, students, and by here we complete the decimal chapter. These 2 sums and question number first and second remaining sums you have to do it by yourself. If any doubt regarding any of the sum, you can get it clear in Google Meet. So see you in the next video with new chapter. So till then, thank you and take care.